आई एम अ वुमेन अवार्ड आप यहाँ पे प्रेजेंट है सबसे, तो वुमेन हो के क्या फील करते हैं, कितना अपने आप को गौरवान्वित फील करते हैं? मैं हमेशा ये कहती हूँ कि वुमेन होना ये नहीं है कि आज हम लोग बहुत ज़्यादा फाइट करते हैं अपनी राइट के लिए. I always say it's not about fighting for a place in a man's world or wanting to do something better than a man. It's not about what I can do better than what he does. It's about living your own choices. मेरी जो चॉइस है, मैं जिस तरह से अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ और मैं क्या करना चाहती हूँ, उसे मैं अपने कन्विक्शन के साथ, फ्रीडम के साथ और करेज के साथ उसको निभा सकूँ. That I think is I am a woman for me, and that choice could be anything. Maybe I want to just be a mother. Maybe मैं घर पे बैठे रहूँ and I'll be a homemaker, or maybe tomorrow I want to do something outside my home. Whatever it is, मैं क्या करना चाहूँ और क्या हूँ और किस तरह से रहना चाहूँ, that I should be able to live with my freedom and conviction, and that is I am a woman. आप अवार्ड प्रेजेंट करने वाले हैं, जी, तो किसे करने वाली है कुछ बारे में बताना चाहेंगे? नहीं, वो नहीं पता मुझे. वो नहीं पता. ओके. I know all the people who are today, जिनको हम ऑनर कर रहे हैं, और so that I don't know. कोई ऐसी इच्छा रखती हैं अभी भी कि आपको ऐसा कुछ करना है, या Of course. टाइम में कोई ऐसे हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें मुझे करनी है. हाँ, एज यू विश, आप बताइए. नहीं, पहले तो मैंने काफ़ी साल, एटलीस्ट 15-20 साल मैंने अपने बच्चों के लिए मैंने दिए हैं. मेरे 2 बेटियां हैं, इसलिए ये जो फंक्शन आज मेरे लिए और भी ज़्यादा मायने रखते हैं. बिकॉज इट्स अबाउट टॉकिंग अबाउट अ गर्ल और वुमेन होना आज की सोसाइटी में क्या है. आई रियली हैव अ वॉइस एंड आई हैव कन्विक्शन. और उसके अलावा अब मेरी बेटियां थोड़ी सी बड़ी हो गई हैं, कॉलेज स्कूल पास कर चुकी हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं और ज़्यादा चीज़ घर से बाहर भी निकल कर सकती हूँ. और सबसे पहले तो मैं एक्टिंग थोड़ा सा कंटिन्यू करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी भी मुझे ऐसा लगता है, स्पेशली आज के दौर में जिस तरह से रोल्स लिखे जा रहे हैं, जिस तरह से फिल्में बनाई जा रही हैं, डेफिनेटली आई फील एक बार और मुझे ऐसी कोई रोल, ऐसा कुछ करना चाहिए where I feel as an artist, as an actor, as an actress, I want to feel accomplished once again and then use myself for any other thing. ऐसा ड्रीम है कि इस एक्टर के साथ में करना है? कोई ऐसा ड्रीम है किस एक्टर के साथ में? मेरे 2 फेवरेट लोग हैं इस इंडस्ट्री में. एक, मैं शाहरुख खान साहब की बहुत ब्लाइंड फ़ैन हूँ शुरू से, और वो पता नहीं क्यों, मैं सभी एक्ट्रेस के साथ मैं काम कर चुकी हूँ, उनको मैं बहुत पर्सनली अच्छी तरह से जानती हूँ, उनके काम को मैं अप्रिशिएट करती हूँ. बट when I see Mr. Shahrukh Khan, I really feel like a fan and I desire to share screen space with him because he is my favorite actor. और दूसरी बात यह है कि आज 25 साल के बाद भी लोग मुझे एक्टर के नज़र से देखते हैं, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ माई, कई सारी फिल्में मैंने की है, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिल्म इन माई करियर हैज़ बीन रोजा, एंड मणि रत्नम जी ने मुझ में रोजा देखा. सो आई डिज़ायर वंस अगेन टू बी अ पार्ट ऑफ हिज क्रिएटिविटी. सो दीज आर माई 2 ड्रीम्स. ओके. एक आखिरी सवाल ये कि एक सुपरस्टार, एक हैंडसम एक्टर को आज हमने खो दिया है हमारे बीच में. जी, विनोद खन्ना है, तो कुछ कहना चाहें आप क्या? विनोद जी को मैं बहुत अच्छी तरह से पर्सनली जानती हूँ. मेरे पापा जब बहुत साल पहले प्रोड्यूसर थे, तो विनोद जी को लेके फिल्म बनाए थे. सो एज अ वेरी यंग गर्ल, एज अ वेरी लिटिल गर्ल, आई यूज्ड टू गो टू माई फादर्स सेट एंड स्पेंड टाइम विथ हिम. Years later, I've acted with him. So, and he lives near my house. और उन्होंने मुझे काफ़ी सारी एडवाइस भी दी हैं अबाउट हाउ टू कीप योर सेल्फ हैप्पी और हाउ टू चेंज. जैसे एक हम किताब पढ़ते हैं और एक पेज फिनिश हो जाता है, उस पेज को किस तरह से फिनिश करके आगे की तरह बुक को बढ़ाया जाए, इस तरह से उन्होंने मुझे फिलॉसफी और फिलोसॉफिकल एडवाइस दी हैं. सो टुडे टू फील दैट ही इज़ नॉट विथ अस, इट फील्स वेरी सैड. एंड आई एक्चुअली कॉल्ड समबडी टू से कि आज का ये फंक्शन होने जा रहा है, कि रियली होगा कि नहीं, बिकॉज आई डू फील कि हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं and on such a sad moment, but that is life, something, I mean, we have to move on, but my respect, and I remember him and I pray for him and his family. Thank you so much. Thank you very much. Ma'am, yeah. Sir, yeah.
Madhu, welcome. Thank you. How does it feel to be... Here's a man who's constituting the I Am Woman Awards. Yes. How does it feel? It feels amazing because I have a definite strong affiliation to all these kind of functions which empowers women. I'm a mother of 2 daughters. So in today's world where there's so much chaos and all the time we are talking about women's place in society, and here's a man who's doing something like that, and that's what we need. We need men who are aware and who are sensitive. So it's not about women fighting for a place in a man's world. It's about living in harmony and synergy together as man and woman in this planet. And somebody like him starting a program like this, it's fantastic, and I'm a part of it. And I truly believe fighting for a place is not feminism. It's about being able to live your choices, whatever those choices are, with conviction and courage, is being a woman. And that is what this program is all about, educating people and making them aware. It's not about information, but making them aware and giving them confidence to find their place in this space. Correct? Absolutely. I mean, what I'm doing is what every man should do. We have to support women. Women are the real architects of society. There's no 2 ways about that. And we all know that once a woman decides to do something, in many cases she can do it better than a man. And I get really angry when I read statistics like 20%, that women get 20% less salaries than men. Why? Men and women are on equal footing. And the whole objective of I Am Woman is to empower women, is to celebrate the inspiration that women give us. Yes. Thanks. So fantastic. बहुत अच्छा लग रहा है, जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है। मेरे से ज़्यादा अच्छी तरीके से कौन बता सकता है? आपको वुमेन बनने ले तो नेचर ने ऐसे आपको वुमेन बना है, पर मेरे लिए वुमेन बनना इतना आसान नहीं था। सो आई एम ट्रू वुमेन। Karan Gupta is a man who is constituting the I Am Woman Awards. एक मर्द औरत को recognize करने के लिए awards करता है। इसके बारे में क्या कहते हैं? ये स्त्री जाति का सम्मान है और उसमें हमारे जैसे को इन्वॉल्व करना, ये आदमी की सोच निर्भर करती है, उनके संस्कार उसके ऊपर निर्भर करते हैं कि वुमेन की एक परिभाषा जेंडर में उन्होंने बांधा नहीं। वुमेन कुड बी एनीवन, ट्रांस वुमेन इज ऑल्सो देयर, सो यू नो जेंडर बिहाइंड वुमेन, यू नो, सो दैट इज गुड। And would you like to add something else? No. I'm so happy and feeling nice coming here. Thank you. Bye, take care.
me being a woman, I'm very proud to be a woman today, and I think to have the pride in being yourself and having honor for yourself, for me that's being I am woman, and to have the pride of a woman is I think the pride of the nation. I think it's a great cause, we celebrate womanhood, and it's nice to come together and feel powerful and be together, and that's growth for me. And what about Karan Gupta, who being a man is constituting the I Am Woman I think it's excellent. This is the second year he's put this. Last year we were awarded in his first year of felicitation, and it's celebrating womanhood. It's talking about different topics of women and encouragement, and a lot of people who have so much facilities who probably don't have the rights for it. I think it's great awareness, and it's superb what work he's doing on the education front, and wish him kudos to it and further more success. Thank you. I think it just talks about the power and potential of women. And you're getting an award here. Obviously, it's a great feeling. So, Karan is a man who's constituting the I Am Woman Awards. What do you have to say about that? I think it's just really wonderful to see people celebrating women, the power, the potential of women, the hope for girls. It's just lovely to see that. According to you, the status of the Indian woman today? It's a big question. I think it depends on which woman you're talking about, but I think the women that we work with in disadvantaged communities, we have a long way to go as a nation to give them the opportunities to really meet their potential. Hoping we're able to do that more and more together. Right. Should you add something? No, that's it. Thank you. Welcome, Farah. Obviously, it's an feeling you're getting awarded and honored here. It's a man who's constituting the I Am Woman Awards. What do you have to say about that? No, what do you say? It's a man who's constituting the I Am Woman Awards. Okay. I always, all I can say is that what Karan and Nitish are doing for this awards is commendable, because to me, the I Am Woman Award stands for empowering women, and women in all different walks of field. I'm grateful, and more than that, I'm happy that a man is actually constituting this awards, because it means that they are actually recognizing that there's so many women out there who are talented and who inspire and who make that difference. Yes. Anything else that you'd like to add? I want to wish the I Am Woman Awards and the Karan Gupta Foundation all the very best for empowering women, and keep continuing doing what you're doing, because you're doing a great job. Thank you. Thank you. Thank you. सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि आई एम वुमेन अवार्ड के मौके पर हम सभी यहाँ पे प्रेजेंट हैं। आप बताइए क्या फील करते हैं आज की शाम? मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ हूँ। मैं ये आई एम वुमेन अवार्ड्स की मैं एक हिस्सा हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये जो फाउंडेशन है, ये करण गुप्ता फाउंडेशन जो है, वुमेन को एम्पावर करती है, और जो भी इन्होंने ये खास वुमेन औरतों को यहाँ बुलाया है, उनको जो अवार्डीज़ होने वाले, वो बहुत टैलेंटेड औरतें हैं जो इंस्पायर करते हैं सोसाइटी को। और मैं खुश नसीब अपने आप को समझती हूँ कि
I'm one of the awardees tonight, so thank you for being here, for me being here. Thank you so much. Okay, all right. Thank you. Good evening, everyone. It's wonderful to be here in front of all you esteemed people. Talking about my journey and my success, I feel a little weird, but still, what I feel and I believe is because of my will and determination, I'm here. I've also faced a lot of hurdles and setbacks. I never thought, it just started as a thought that culminated into this beautiful dream. I was a very shy, introvert girl. I never thought I would do something, I would be able to do something like this. Yes, it took a lot of courage, to break through my fears. Especially, coming in this field, it was like to hear a no many times. Whether initially I had to hear a no from a director, from an actor, many times. So it took a while for me to really be there and to believe in myself and to hear a no and still go ahead. And that's how I've started my journey. Fantastic. I guess for me, my journey, I never really started out thinking I'm going to build, a digital empire or any like that. I was really blogging for fashion. I love to write, and I've done different things, whether it was running digital content or being a backup dancer for Sukhbir or being in the radio. And I always felt that the one thing that connected me with people were my words or my voice. And that's really what I was trying to do. And I think the one thing, like you said, what is it that people can do? How can they succeed, or how do they find what their dream is? I think it's really find that passion. And I say this very often, that, before you try to become rich and famous, think about the one thing that you would do for the rest of your life, even if no one paid you to do it. And then do that. Pursue that as your career. And I'm sure all the women on the stage will agree that the universe will conspire to make you successful at it. And I think that's what I encourage all the women and the boys to find the thing you're passionate about. We actually live in an amazing time where you can make literally anything your career, careers that never existed, even 10 years ago. So I'm excited for everyone who's, the millennials who want to do something today. Fantastic. Let me come to you, Shaheen, and understand, because you're also, sort of started off in a very difficult space. I'm assuming. Tell us a little bit about your journey, and were a little different from, let's say, somebody who was striving in the corporate world or in the world of fashion or movies, for example. So give us your perspective. Sure. It's such a good question. Like, what would you share with somebody else? I think being able to hold the truth and the hope. So the truth is that I'm getting an award today, and the truth is that I'm educating through Teach for India, where I work 42,000 kids today. The truth is also that there are 320 million kids in India, most of whom don't get an excellent education. So I think being able to hold both of those, and then there's the hope, and I feel incredibly blessed to do the work that I do, since it's all about women today. A quick story. One of my students, Priyanka, lived in a slum community in Pune. Her father's in jail for life. He escaped. He married 4 other women. He had 7 other children. She grew up with tremendous instability, and that girl just wanted to do something with her life. And so she came into Teach for India. She got into the United World College in Italy. She graduates from there this year. She's just got a full scholarship into Franklin Marshall in the US. That's not the incredible part of the story. The hope is that she, last year in her summer holidays, brought 10
of her friends from Italy, they were from all over the world, to India to live in her home in the slum and do community work. So that idea of how do you find your potential, but how do you spread it? How is education about being our best, but how is it about making the world better? And I think just being obsessed with whatever you want to do, right? And I think that probably speaks for everyone on this panel. We're just sort of obsessed with what we do. That, I think, would be my advice. Yeah. That's so interesting, because it's a recurring... All these three wonderful women here. It's very important in life to have passion, creativity, and drive, and I think that's what actually happened to me, because I'm the kind of person that if I want to do something, I do 100% or I don't do it at all. And so I never planned to be a jewelry designer. I actually planned to go to LA and party. And I decided that if I'm 100% of it. So I convinced my parents that I wanted to do jewelry design because a friend of mine was going and I needed an excuse to go to LA. And, but when I landed in LA, I opened my books and I had a heart attack because gemology is not jewelry design. Gemology is actually a science, and jewelry design is artistic. So here I was, way neck deep into work that was math, science, all the subjects I hated in school, and I was like, now what? But I broke those fears, and I actually said, okay, I'm now 100% going to study. So instead of becoming this party animal I hoped to be, I became the Indian nerd. And I put 100% of my work into my study. That paid off because I topped my class and I came back to India and I had all this knowledge and I was like, now what? And I started interning with various jewelers and various people because my parents believed that they had given me an education as my legacy and I need to build it on my own. It wasn't like, darling, let me fund you and let me open a store for you. So I had to work it all by myself. So I actually worked from ground level and built my life. It's been a long journey of 25 years. Up until 3 years ago, almost 4 years ago, I lost everything I started off with because I trusted too many people. And I was just a jewelry designer before that. I ended up being in court for 6 months in a litigation with someone who took me to court to prevent me from using my own brand name because he was a partner in my company. So I restarted my life. Those 6 months in court were the best lessons I learned, and I decided that now I need to relearn what I had learned. So from just a jewelry designer, I became a businesswoman, and I became a lawyer and a banker and an accountant and everything that I never was. So I thank the guy who took me to court, and I think that you learn the best from failure. And I have learned so much from failure that now the only way is up. And after I split with him, I opened my own manufacturing company, and I actually started working with Tanishq, one of India's largest retail chain. And that wouldn't have happened to me if I hadn't split with my partners. So all good things happen from bad things, and that's what's common between all of us is we're all passionate about what we do. And I don't love to design, I live to design. So I think it's my passion that's brought me here, and what I actually share with people. Thank you. For me, my parents have been my greatest support, because my parents always encouraged us to empower women and to break the mindset. You need the backing of your parents right from a young age. And unlike most mothers, my mother never said, oh, you're my princess, and you know, you have to grow up and look beautiful, and you have to dress like this, and you have to marry this person and this. You know, because women are brought up all the time by their mothers, teaching them to look beautiful and only marry rich men and make their lives. And my mother always said to me, never think you're the most beautiful woman in the world, because there are 100 million women better looking than you. And she used to say to me, I want you to work, and I want you to support yourself and make something out of your life. And so thank you, Mom, for that support. She's here right now. She's my superstar. She's my woman of substance. And I think that's what changed it all for my sisters, whether it's my sister Simone or my sister Suzanne or myself.
we're all working women, and I think our example was my mother who used to work. So we were brought up to think that we were gorgeous and drop dead and we should look for Prince Charming. We were brought up to be humanitarian, have kindness, compassionate, be sensitive, do charity, help people. And I think that's what's important as women. So my mother was a great support system to me on that front. My dad taught me to be fearless, to speak my mind, to speak the truth, no matter if the world is against you. Stand up, do not bow down. And I think that's what actually gets me into these controversies on Twitter sometimes and social media, because I actually speak my heart and I actually say what it is. I'm not trying to powder someone up or live up to someone's just because the world thinks that they're God, that I need to be subservient to them. So I speak my mind. So thank you to my dad and my mom for giving me that. And I am who I am because, and I think every woman is, we have the confidence only to be who we are because of our upbringing. So that's there. Thank you. Today to go out there and be a lot more confident in achieving their dreams. As I said before, it takes a lot of courage. So it is. It takes a lot of courage to be where I am today. So, of course, my family values have also kept me so strong that wherever I go and whatever I'm exposed to, I'm grounded and I know what I'm doing. It's not that my head is always on my shoulders and I'm grounded. I've also faced a lot of problems, like when I started the film Ranjana, like my film in my own colleagues. They said, what am I doing? I think she's here to just waste money or something. And actually my husband stood by me and like, he said, no problem, I believed in you and I've done this. Now I have to take the back. I was like nervous and because I had seen his work and the way people spoke to me that time, I felt I think I've done something wrong or I've taken a wrong step. But still I went ahead and I believed in myself and as the trailer was released, like I had all my colleagues come up to me and they said, sorry, Mom, we spoke and I just got to know, I never told them that I knew what you spoke about me at that time. So they said, they just saw the trailer and they said, fantastic trailer and you've done a brilliant job and we're very proud of you. It made me feel so overwhelmed that, okay, I'm doing something right, and especially to know that my husband is there with me, he's very supportive. And many times I did feel that now I just can't feel this man's world. Every now and then they keep telling you something or the other. But still I'm in a struggle. I'm still struggling because I made around 11 to 12 films I've produced. Maybe one film has not done well. So it looks like my journey is again started. I yet have to prove myself from the beginning, from where I started. So I'm right now at that stage, starting again, trying to prove what I'm doing my next will bring me back to where I am. का और ऐसी महिलाएं हैं आज इस प्लेटफॉर्म पर जिन्होंने हमें अपने अपने फील्ड में बहुत कुछ अचीव किया है। मानसी एक सेगमेंट जो होस्ट कर रही हैं, जो मॉडरेट कर रही हैं, वो जिन लेडीज़ के साथ बात करेंगी, दे हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, जो रियल स्ट्रगल होता है लाइफ में, वो सब देख चुकी हैं, तो बहुत प्रेरित करती है ये सारी चीज़ें। और मेरे लाइफ में पर्सनली जितनी भी महिलाएं हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग महिलाएं, चाहे वो मेरी माँ हो, मेरी पत्नी हो, चाहे मेरी बेटी हो, तो I'm extremely honored to be here and thank you Karan Gupta for calling me here. Mansi, after a long time you have came in on the screen, so how response you are getting? Well, it's been a good response. लोगों से अच्छा सुनने को मिल रहा है, तो अच्छा भी लग रहा है और मुझे वापस टेलीविजन पे आके एक्टिंग करना बहुत मज़ा आ रहा है, so it's a good feeling. Okay, any message you'd like to give to women? To women, there's only one message. All women, all of us should हमारे अंदर एक
एक आवाज़ होती है, उस आवाज़ को हमेशा सुनो। मैं मानती हूँ कि वो जो हमारा इनर वॉइस है वो हमें हमेशा सही रास्ते पे लेके जाएगा, तो बस उसको सुनो। एक आखिरी सवाल ये कि आज के दिन में इंडिया के सुपरस्टार हैंडसम एक्टर जी हमारे बीच में, मतलब क्या बहुत दुख की बात है। मैंने अभी भी ट्वीट किया है कि वी लॉस्ट अनदर लेजेंड, लेकिन लेजेंड से ज़्यादा मेरी जो दूसरी फिल्म थी वो उनके साथ थी, और बहुत दुख की बात है कि विनोद साहब हमारे बीच में नहीं रहे, क्योंकि अच्छे कलाकार तो थे, ये सब जानते, इतने हैंडसम आदमी थे वो सब जानते, लेकिन इतने अच्छे इंसान थे वो। उनके साथ जब भी मुलाकात होती थी ही वाज नेवर लाइक अ सुपरस्टार, इतने बड़े सुपरस्टार थे, लेकिन बहुत दुख की बात है। एंड आई थिंक फिल्म इंडस्ट्री आज मातम मना रही है। वो एक ऐसे इंसान थे जिनके बारे में कभी भी आप कोई बुरा नहीं सुनेंगे। हर इंसान के बारे में, हमारे बारे में कोई अच्छा बोलता है, कोई बुरा बोलता है, लेकिन विनोद जी के बारे में कभी भी मैंने womanhood and women's success through I Am Women, and I think that's incredible. I wish Karan Gupta and Nitish of all the wishes and congratulations yet again for celebrating I Am Women for the second year this year. Can you tell us about what are the things that women need today in India? Every woman needs to start something of their own. It enhances her confidence, and a feeling of achievement cannot be compared with anything else. And for a woman, when she starts something of her own, she not only it is not only a feeling of success, but it's also she's doing something for the society, and that's, I think, incredible. Thank you so much. Thank you very much.
Mangesh? We'll do a bite here, Nitish. Together we'll do. Yeah. One bite. Sir, okay? Sir, yeah. Sir, madam, yeah. Both of look. Sir, yeah, left side. Madam, left side. Your eyes, एक second. Ma'am, just steady, all of you. Last one straight. Sir, here. Sir, straight. Sir. Thank you. Thank you. We'll do the bite. Yes, Yeah, sure. just that. Karan, sure. Please, I'll pay them. She'll do only one bite. So come together. Some put your mic ahead. Put your mic here. This camera. Rolling? Yes. What does I Am Woman signify to you? I Am Woman, which is an award presentation by the Karan Gupta Education Foundation. It signifies empowerment. It signifies that today's women has the strength to barge ahead. It signifies that women is the real Shakti, you call Stree Shakti. And you have to just recognize it so that others are also motivated, and those who are awarded are in turn again motivated to do even better activities in the future. Here's a man who's constituting the I Am Woman Awards. What do you have to say about that? He's a great person, as I've come to know that his foundation, he's himself a Harvard graduate, and the foundation is doing great work. Karan Gupta Foundation is into child welfare and women empowerment, and I feel so women and children are the basic foundation of our country, the gift for us, for our country to develop further. So whatever they are doing, even for the handicapped, having various skill development classes, or getting investments or donations directly to the end users, all this is really appreciable, and they will go a long way towards empowering women and improving the condition of poor children. Karan, your thoughts. Ma'am's your It is my absolute pleasure to be with a woman who is a banker, a social activist, and one of the most beautiful singers that I have ever seen. The last few days, I've only been hearing ma'am's songs. And the more and more that I read about ma'am and the work that she's done for the villages of our country, for women empowerment, she's with mentally retarded children, the work, it's an example to women everywhere. Ma'am is an inspiration. Mrs. Fadnavis is one of the most dynamic women that our country has seen. And ma'am, what do you feel today's woman needs in terms of women today? What do you feel women need today? I feel that every woman has a different color in her, a different talent in her. What she needs is to hone this talent. What she needs is a bit of confidence. What she needs is family support. And if parents support their daughters, I don't think so anyone can stop a daughter to touch the sky. Thank you. Thank you. Ma'am, come with. औरतों के साथ भी काम करने लगी, ये सारी चीज। और 2014 में सुप्रीम कोर्ट में मैंने पिटीशन दायर किया। मुझे बहुत खेद होता है यहाँ पे बोलने के लिए, ये मंच यहाँ उसके लिए नहीं है, माफ कर दीजिए मुझे। सुप्रीम कोर्ट का पिटीशन करने के लिए जब मैं सर्वोच्च न्यायालय के पास मेरे अधिकारों के लिए जाती हूँ,
पार्लियामेंट में बैठे वाले लोग क्या कर रहे हैं। 2014 में मैं सुप्रीम कोर्ट में मैंने पिटिशन किया कि वी वांट आवर राइट्स, और इसलिए आधार कार्ड में एज अ थर्ड जेंडर आया है। Wow, that's great. And I am the petitioner for the transgender bill. Wonderful, wonderful. तो इस तरीके से काम होता है। हमारा HIV रिस्क हाई रिस्क बिहेवियर के लोग हैं, तो उनके साथ चार चौकी काम करती है, एम्पावर करती है लोगों को कंप्यूटर, क्योंकि लोगों को अभी भीख मांगना छोड़ के हम अगरबत्ती कैंडल बनाना नहीं सिखा सकते, और लोगों को इसमें इजी मनी है, तो दूसरा क्या करेंगे। एक डिग्निटी से जीना सिखा रहे हो। तुम्हारे लिए परिभाषा है, डिग्निटी का परिभाषा क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। डिग्निटी की परिभाषा क्या है? मैं एक किस्सा कहना चाहूंगी। मेरी बच्ची को मैंने इस तरीके से पाला है, क्योंकि मैं उसे कहती कि बेटा मैं तेरा पापा भी हूँ, तेरी मम्मी भी हूँ, तो ऐसे देखती है मुझे। तो उसने मुझे पूछा, और बहुत सोचने वाली बात, मेरी बच्ची ने मुझे पूछा, 11 साल की लड़की मुझे पूछती है, आई शूर्पणखाने फक्त रावणाकडे डिझायरच व्यक्त केलं होतं ना, मग त्याने तिचं नाक का कापलं? शूर्पणखा ने लक्ष्मण को सिर्फ बोला कि मुझे तुम पसंद हो, उसने उसका नाक क्यों काटा? और रावण ने लक्ष्मण का नाक नहीं काटा, सीता को क्यों उठा के लेके गए? आप समझने की कोशिश करिए मेरी बेटी कितनी ब्रिलियंट होगी। Very true. हम औरतों के ऊपर बात करते हैं, शोषण हमारे समाज में पहले से होता है। औरतों को हमेशा उसका एक ही सवाल मुझे झिंझोड़ के जाता है, औरत होने की परिभाषा बहुत हम अलग अलग करते हैं। मेरे लिए इतना आसान नहीं था ये कफन का कपड़ा ओढ़ के। मैं आज रात को कहीं स्टेशन पे सोऊंगी तो मुझे पता नहीं होगा मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि ये कपड़ा औरत होने की इज्जत मुझे देता है, पर ये मेरे सुरक्षा का कवच भी है। बहुत सारे ट्रांसजेंडर स्ट्रीट पे आप देखते हैं, सिग्नल पे खड़े रहते हैं, आप लोग बोलते काम क्यों नहीं करते हो? अभी तक काम नहीं दिया। अभी तक वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट के साथ हमारा पिछले 4 सालों से बजट आ रहा है पिछले गवर्नमेंट का, अभी तक पंकजा मुंडे इज नॉट रेडी। परसों हमने जाके मंत्रालय में तमाशा किया, और कल जाके आम्हाला त्यांनी तारीख दिली ताई ट्रान्सजेंडर बिलसाठी। सुप्रीम कोर्टाचं ऑर्डर असून सुद्धा आतापर्यंत आपल्याला काहीच करत नाहीये। आपलं फर्स्ट स्टेट आहे महाराष्ट्र जिधर वेलफेयर बोर्ड के बारे में कल्याणकारी बोर्ड कर दो, लेट गिव एजुकेशन। अभी भी कोई भी कॉलेज में अगर आप देखो एजुकेशन दो, बिल्कुल एजुकेशन होगा तो लोग भीख नहीं मांगेंगे, लोग एम्पावर होंगे। जी, सबसे पहला पड़ाव आई थिंक किसी को भी एम्पावर करने का मेरे हिसाब से एजुकेशन हो, चाहे वो औरत है, बच्चा है, ट्रांसजेंडर है, कोई भी, द सेक्स ऑफ दैट पर्सन डज नॉट मैटर। करेक्ट। we have to realize that to traverse 1,000 miles, we have to take a first step. That is what we did and we are still doing. What is needed the most in these villages is counseling. The farmers who are committing suicide, the children who have become suicide prone, they need these women who are getting awarded today here. They need to go there, tell their stories and inspire these villages. And if you have time, you can always join hands and be a part of creating a revolution for our Annadatas. The second area of concern for me, I've always been touched by atrocities towards women. And that made me work towards causes like acid attack victims or taking care of the overall wellness of the labor class and all such things where women are involved. Now we are creating a network of women wherein police machinery would work parallel, but there would be empowered women who will take charge of atrocities which are
committed towards women and take care that these are not done. And this network is going to go into villages, talukas, towns, everywhere. There is a lot to do, and in fact what we do is just a drop in the ocean. But these drops matter, and the ocean is made of these drops. So let us keep on contributing, because we all want to be happy, and the best way to be happy is to lose ourselves to the service of others. So with this, I just call upon all of you. You all are people from privileged backgrounds, and I feel that destiny does not depend on the shoes we wear, but on the steps we take. So let's take all positive steps towards the betterment of the society, so that one day we all stand up and say that yes, we live in an India of our dreams, an India which is free of all kind of negativities. So let's look forward to an empowered India with women for making India a better place to live in. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. आपकी ये स्टोरी सुन के इतना अच्छा लगता है, और it's such an inspiring story, because what you have done is that you have surmounted what can be called difficulties of another level, which आम आदमी की जिंदगी में ऐसी difficulty नहीं आती है. तो ये strength कहाँ से? First of all, thank you so much कि आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ, और करण सर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है. फाइनली मैं आ गई यहाँ पे और मुझे लग रहा था कि मैं आ पाऊंगी, क्योंकि अगर आप जितने पॉजिटिव रहते हो, जितना पॉजिटिव सोचते हो, उतना पॉजिटिव आपको मिलता है. और क्योंकि मेरे ऊपर 2005 में एसिड अटैक हुआ था, और उस वक्त में मैं 15 इयर्स की थी. और जब भी कुछ भी होता है, चाहे हम बीमार होते हैं या कोई अटैक होता है, तो उस वक्त में हमें सबसे ज़्यादा अपनों की ज़रूरत होती है. और ये तो एक अटैक हुआ है, लेकिन अगर अचानक कोई बीमार हो जाता है और अगर हम उसे अकेला उस पेशेंट को छोड़ दें, तो वो जीने की इच्छा ही छोड़ देगा. और अगर हम उसको सपोर्ट करें, तो कभी जैसे डॉक्टर्स भी कहते हैं कि इसको दवाइयों से ज़्यादा दुआओं की ज़रूरत है. उस वक्त में मेरे पेरेंट्स का मेरे साथ बहुत सपोर्ट रहा. मेरे रिलेटिव्स ने मेरा साथ छोड़ दिया था, मेरे दोस्तों ने साथ छोड़ दिया था, कोई भी नहीं था मेरे आगे पीछे. और मेरे पेरेंट्स थे, और एक आंटी थी, पापा की बॉस, और मेरी लॉयर. 4 लोग पूरी दुनिया से बराबर थे उस वक्त. बहुत हिम्मत दी. उस वक्त मेरे साथ ऐसा हो गया कि मैं 1.5 साल की बच्ची की तरह महसूस करने लगी, चलने लगी घुटनों के बल. लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट आने लगी मेरे अंदर. 2007 में मैंने 10th में एडमिशन लिया. फिर बैक टू बैक सिर्फ दिखता है कि एसिड अटैक हुआ है, लेकिन जो आप नॉर्मल लाइफ थी, रेगुलर जो लाइफ जी रहे हैं, उसके बाद भी आपको बहुत सारी चीज़ें सर्वाइव करनी पड़ती है. उसने एसिड डाला एक बार, लेकिन सोसाइटी एसिड डालती है हर दिन. हर दिन आपको बहुत सारी चीज़ों को लेके सरवाइव करना पड़ता है, क्योंकि सोसाइटी ने मुझे निकाल के फेंक दिया अपनी जगह से. और उस टाइम पे उस क्रिमिनल को एक्सेप्ट कर दिया. जब मेरे ऊपर अटैक हुआ तो वो लड़का जब 1 महीने के बाद जेल से बाहर आया, तो सबसे पहला काम उसने शादी किया. और जब उसकी शादी हुई तो वही दिखता है कि सोसाइटी कितनी प्यारी है, कि मुझे रिजेक्ट कर दिया, बल्कि मैंने कुछ भी नहीं किया था. और उसके बाद उसको एक्सेप्ट कर लिया, और उसकी अरेंज मैरिज हुई. 2009 में मैंने ड्रेस मेकिंग, टेलरिंग, ब्यूटिशियन, बेसिक कंप्यूटर अपने बलबूते किया, बहुत हिम्मत करके, क्योंकि पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा. सबसे बड़ा चैलेंज था मेरे लिए मेरे फेस को ओपन करके चलना. मैं फेस कवर करके चलती थी. मैंने डिसीजन लिया कि मुझे फेस ओपन करके चलना है. तो उसके बावजूद भी लोगों ने मुझे इतने गंदे गंदे कमेंट किए कि पीछे से बहुत अच्छी दिखती है, सामने से बहुत डरावनी दिखती है, लोग बच्चे देख के डर जाएंगे. ये रिएक्शन मिला मुझे. लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि लक्ष्मी, लोग तो नॉर्मल लोगों को भी नहीं छोड़ते हैं. जिस शादी में जाते हैं, जहाँ खाते हैं, उन्हीं के लिए बुराई करते हैं.
और वैसे भी क्राइम मैंने नहीं किया है, एक उसी सोसाइटी में से निकल के एक बंदा आता है और मेरे ऊपर एसिड डालता है और मैं अपना फेस कवर करके क्यों चलूं? फेस तो उसे कवर करना चाहिए। समझ में आना चाहिए कि आपकी ही सोसाइटी में से एक बेटी के ऊपर एसिड अटैक हुआ है, वो अपना फेस कवर करके चले। तो कहीं ना कहीं मैं उस सोसाइटी की बहुत थैंकफुल हूँ कि वो मुझे इतना नेगेटिव करते चले गए, बट लेकिन उसका अपोजिट हुआ। जैसे उस लड़के ने ये सोचा था एसिड डालते वक्त, उसने मुझे जान से नहीं मारा, उसने मेरे ऊपर मेरी खूबसूरती को मिटाया, इसलिए क्योंकि उसको लगता है कि चेहरा सबसे ज्यादा जरूरी है। उसने सोचा कि मैं 4 दीवारी में हमेशा कैद रहूंगी, मुझे कोई नहीं अपनाएगा, उसने ये सोचा। लेकिन मैं उससे अपोजिट निकल गई, तो मुझे ऐसा लगता है उसके लिए सबसे बड़ा पनिशमेंट है। और कहीं ना कहीं आप सब लोगों से मुझे इतनी हिम्मत मिलती है कि मैं जब भी कहीं जाती हूँ, आज मैं एक एनर्जी और साथ लेके जाऊंगी। मैंने एक TEDx टॉक सुनी जिसमें आपने कहा कि he threw acid on my face but he didn't kill my dreams. Exactly. So, do you ever meet him? उसके बाद एसिड अटैक के बाद आपने कभी उसको सामना किया? आपको कुछ लगा कि मैं उसे जाके कुछ बोलूं या क्योंकि जब शुरुआत में कोई अटैक होता है, क्योंकि एसिड अटैक बहुत हीनियस क्राइम है और ये इतना पेनफुल है कि जब एसिड डलता है, हम प्लास्टिक की पॉलीथीन को जब जलाते हैं वो मेल्ट करती है, ऐसी स्कीन मेल्ट करती है और बहुत पेनफुल होता है और लाइफ टाइम के लिए ट्रीटमेंट होता है। उस वक्त में ये फील होता है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं भी उसके साथ ऐसा करूं। बट लेकिन आप हमारे हाथ में एसिड दे दो, हम उसके ऊपर नहीं ऐसा कर सकते, क्योंकि उसने जो किया हम वो नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों ने कहा कि जिसने जैसा किया उसको वैसे ही करो। मुझे ऐसा लगा कि आप खुद सोच के देखो, अगर हम भी उसके ऊपर एसिड डाल देंगे, उसमें और हम पे क्या फर्क रह जाएगा? तो हम भी क्रिमिनल वही चीज कहलाएगी। मैं बहुत बार उसको फेस किया, उसकी वाइफ को फेस किया, उसकी फैमिली को फेस किया जो इतना सपोर्ट मुझे करती थी। और मुझे ऐसा लगता था जब मैं कोर्ट में जाती थी कि क्रिमिनल मैं हूँ, उसकी बहन आपकी दोस्त थी। बिल्कुल, राइट, हाँ। तो यही लगता था कि मैंने, उसकी वाइफ मुझे ऐसे देखती थी और वो दोनों ऐसे आते थे कि जैसे किसी गार्डन में आए हैं और आके एकदम ऐसे खड़े हैं रुआब में और मेरे ऊपर ऐसा रिएक्शन दे रहे हैं मुझे कि मैंने बहुत बड़ा क्राइम किया उसको। तो मुझे बड़ा वैसा फील होता था कि एक तो आपने रियलाइज नहीं किया। हाँ, मेरे मन में सवाल ये है उसके लिए कि मैं उसे पूछना चाहती हूँ कि मैंने सिर्फ मना ही तो किया था शादी के लिए, उसके बावजूद आप अगर इतना ज्यादा प्यार था तो आपने कैसे शादी कर ली 1 महीने के बाद? क्या रीजन है? रीजन इसका मुझे भी पता है क्या हो सकता है। उसने एक लड़की को यूज किया सिर्फ इसलिए कि मैं जल्द से जल्द रिहा हो जाऊं जेल से। लड़की का ये यूज था, बट उस लड़की को शायद ही पता हो बेचारी। मुझे लोग बेचारी बोलते थे, बट मुझे लगता है वो बेचारी है और वो बेचारा है।
मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और करण के साथ बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी हो रही है क्योंकि बैक टू बैक, क्योंकि अवार्ड आपको इसलिए नहीं मिलता है कि आप लेके घर पे रख लो, आपको अवार्ड इसलिए मिलता है कि आप आगे और अच्छा काम करो, क्योंकि आपको वो और हिम्मत देते हैं, आपको पुश करते हैं, तो अच्छा लगता है। थैंक यू करण, थैंक यू सो मच। दिस इज़ माई प्लेजर। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं लक्ष्मी जी के साथ खड़ा हूँ, मैं लक्ष्मी जी के साथ मेरी मुलाकात हुई, ये मेरा सौभाग्य है। जिस तरह का काम लक्ष्मी जी कर रहे हैं, जिस तरह अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, उन्होंने अपने देश का कानून बदला है एसेट सेल के लिए, इस तरह के व्यक्ति के साथ मैं खड़ा हूँ यहाँ, ये मेरा सौभाग्य है। थैंक यू सो मच। Yes. How does that feel? I must say it's fantastic because for the first time, not for the first time, but at least they've understood what we women are for. And I think soon a time is going to come, as it is we are almost equal, but now we're going to be more than equal with them. And I think I say kudos to all women who are strong and who have it in them to be the best. Right, and your daughter's received an award. I'm happy for her because she is the best. Not from me, but from my mother's heart and also from the world over. She's a very honest person, a lovable person, and a giving child, which is most important. Super. Thank you. Obviously, super. I feel happy but I still feel I don't deserve this award. Because after hearing so much about Lakshmi, the acid attack, the way she has struggled, I think our struggle is nothing compared to her. And Gauri also. So after hearing getting the awareness of what they've gone through, so I feel my struggle is nothing compared to them. So whenever I see this award especially, I will really think of both of them. Right. So it's Karan Gupta, a man who's constituting the I Am Woman Awards. What do you say about that? I'm very happy Karan has culled the right kind of woman to achieve this award. And I hope he continues to do that because it's very important to choose the right kind of people and to understand and to see what struggle they've gone through. It's also quite tedious to actually do that. You know, from all over the world, I mean India at least, not the world, but at least India, to pick those kind of women, it'll be fantastic. Anything else that you'd like to add? One second. So anything else that you'd like to add? The best thing I just said, the interrupt ho gaya to my mind's changed. All good. Thank you. Thank you.